Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with the question and answers of poem No. We have discussed the poem in detail in the earlier video. We have covered the reading part, explanation and word meanings. And now we'll move towards the exercise. Exercise A, understanding the poem, question and answers. On page number 15. Question number 1, part A says, in what way is the title of the poem a good one? So the title of the poem is No, and they are asking us the way in which the title is a good one. So we have to find out that how the title of the poem matches with the poem. In my opinion, students, the title is a good one because it is reflected in every line of the poem. As you can see that every line is starting with the word no in the poem, right? So it is reflected in every line of the poem, including the last line in which the poem is summarized by yet another no word, that is November, right? So if you noticed in the poem, you'll find that each line starts with the word no, and even the last line starts with a word that is not exactly no, but that consists of the beginning sound of no, that is November. Just have a look and you'll find the same, that all these lines are having their beginning sounds as no, and in the end you'll find that this word November has a no itself, right? Moreover, students, you can write in the answer that the poem has a good title because November is in the autumn season when summer has come to an end and nature is preparing for winter. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो ये वर्ड नो से स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि हर चीज़ में एक ऐसा पैटर्न शो किया है कि जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नो का वर्ड कहाँ पर होता है? जो चीज़ अवेलेबल ना हो। तो जो नवंबर का सीज़न है वहाँ पर भी क्या होता है? ऑटम का सीज़न एंड पर आ गया होता है, सॉरी जो समर है वो एंड पर आ गया होता है और ऑटम का सीज़न चल रहा होता है और नेचर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर विंटर। ठीक है, विंटर का सीज़न आने वाला होता है। द नेगेटिव नो टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न्ड। और उस वक्त हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, जो ट्रीज़ हैं, जो हमारे पास लीव्स हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे होते हैं और विंटर का सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, part B says, is there a rhyme scheme to the poem? So students, if you look in the poem, you'll find no rhyming scheme, no regular rhyming pattern. So we'll simply write that there is no regular rhyming pattern or scheme. Then we have part C, which words in the poem tell us about the following. Now students, we have to find out words that tells us about times of day, that tells us about roads, that tells us about motion or interaction, weather conditions or geographical features, living creatures and plants. So we have to find out words that tells us about these words, right? So I have figured out some words and I am giving you the collection. You can find your own collection also. Here I have jotted down a few words and these words in the poem tell us about the following. For times of day, we have these words: morn, that is morning, noon, dawn, dusk, proper time, afternoon. These words highlight times of day. Number 2, roads. Road itself, street, T at the side of the way, row, crescents, way, ring. These words again tells us about roads. Number 3, motion or interaction. So we have to find out words that highlight about motion, movement or interaction of people, meeting of things. So indication, recognition, courtesies, showing, knowing, traveling, locomotion, inkling, notion, go, mail, post, news, cheerfulness, helpful ease, comfortable feel. All these words tells us about motion or interaction. Then number 4 is about weather, conditions or geographical features. So we have few words that tells us about them: sun, moon, sky, earthly view, land, ocean, coast, park, warmth, shade, shine. These are the words that tells us about weather conditions or geographical features. Because if we have sun in the sky, it means it's a sunny weather. And if we have a clear sky, it means there are no clouds. So it's a clear weather. Here comes number 5, living creatures and plants. The words that tells us about them are people, company, nobility, member, butterflies, bees, fruits, flowers, leaves, birds. These are some of the living creatures and plants.
We have completed till part C, students, and now we'll move towards part D and E. These questions are more difficult, so we are going to discuss them also. How would you describe the general picture painted by the poet? Now you have to give your opinion that how would you describe the general picture painted by the poet, the explanation of poem. Is it a cheerful one? That is, what do you think? Is this poem indicating something cheerful? So students, you can say that the poem describes a month, November. ठीक है, ये तो बात हमें पता चल गई कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नवंबर, दैट इज इन लेट ऑटम, जबकि ऑटम का सीजन खत्म हो रहा होता है और विंटर स्टार्ट हो रहा होता है, इन विच देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स इंडिकेटेड बाय नो, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में होती हैं, यानी कि ख़त्म हो चुकी होती हैं या ख़त्म हो रही होती हैं, तो हमारे पास वहाँ पर एक नो का साइन आ रहा था. द पोएट डिस्क्राइब द सीजन एज बीइंग वन विदाउट वार्मथ और चीयरफुलनेस. तो चीयरफुलनेस नहीं होती, कोई वार्मथ नहीं होती, कोई लोगों के अंदर एंथुजियाज्म नहीं होता. इट हैज़ नन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स दैट फीचर इन सम अदर मंथ्स ऑफ द ईयर. तो ये वो मंथ है जो बाकी 11 मंथ से बिल्कुल डिफरेंट होता है इन द वे कि हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती जो साल के बाकी महीनों में हमें अवेलेबल होती हैं. However, he does this in a cheerful way, so the poem is not depressing or sad. इसके बावजूद स्टूडेंट्स, इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इसको पोर्ट्रे किया है इस पोम में कि इट इज़ नॉट डिप्रेसिंग और सैड. Now we'll move towards part E. Do you think the poet has a good sense of humor? Why? Again, students, we have to provide our opinion that do you think. So you'll have to tell that what do you think that either poet has a good sense of humor or not. And if you say so, yes, why? If you say no, why? So students, I am providing you my opinion that although the poem is full of negative statements, the poet still manages to make it sound fairly cheerful. ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पोम के अंदर अगरचे सारी चीज़ें नो से स्टार्ट हो रही हैं और सारे नेगेटिव्स को इन्होंने जो है वो एक जगह पे सारे जमा किया है, इसके बावजूद पोम के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त सी हमें जो है वो एक पैटर्न नज़र आ रहा है और एक चीयरफुलनेस है जो उन्होंने पूरे पोम के अंदर कायम रखने की कोशिश की है. So the rhyming couplets, the use of the same word to start each line, and the pace at which the poem moves all help to make it cheerful. तो क्या चीज़ है जो पोम को cheerful बना रही है कि आपने देखा सारे सेंटेंसेस नो से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, इन्होंने जो वर्ड्स का कलेक्शन यूज़ किया है वो, इसके अलावा इन्होंने सेम वर्ड से सारी लाइन्स को स्टार्ट किया है और उसके बाद जिस तरह से पोम को ये आगे लेके चले हैं तो इसने इसको पोम को cheerful बना दिया है. तो द लास्ट लाइन शोज ही हैज़ ह्यूमर. नवंबर को इन्होंने एक पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए नवंबर से नो की तरफ लेकर आया, उसी को कंटिन्यू किया, तो इससे पोएट के ह्यूमरस होने की तरफ इशारा मिलता है. सो वी कैन से दैट द पोएट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड हियर आई हैव टोल्ड यू व्हाई. आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द रीज़न. Here are the question answers, and students, if it was helpful for you, please hit the like button and share it with your friends. Thanks for watching the video till the end. Please subscribe to the channel. Allah Hafiz.